Assalamualaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today. So in today's video, as you have seen from the thumbnail, I'm going to share with you a whole skincare routine of rice. Yes, there are products available in the market that can be used for your skin made up of rice. I'm a working woman. I don't actually have too much time to prepare the ingredients like herbal ingredients. I want something bottle packed and that is ready to use, and the results should be good. Its price should be not more than 250 rupees. Yeah, that's the limit for me. I don't buy expensive thing. I don't buy high-end brands. I need something सस्ता and टिकाऊ for my face to work. अच्छा, मैं जब अपने face पे बहुत कुछ ना लगाऊँ ना, तो मेरा face you have seen before what was its condition, and if you haven't seen, go check out my previous video. You will see some patchiness on my face, and that was because of some hormonal problems. So yeah, it happens only few times in a month, but while I was posting every day and I was not aware of the best products out there, yeah, I'm gonna share with you so you can also get benefited. So yeah, if you're interested, then let's start the video. अब मैं आपको इन प्रोडक्ट्स का क्लोजर लुक दे देती हूँ. शुड आई गिव देम स्टेप बाय स्टेप और शुड आई गिव देम एट वंस? या लेट्स जस्ट टेक द क्लोजर लुक ऑफ द प्रोडक्ट फर्स्ट. सारी इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ, एंड देन आई एम गोना अप्लाई ऑन माई फेस एंड शो यू द रिजल्ट्स. आई हैवंट यूज एनीथिंग. लिपस्टिक लगी है और कुछ भी नहीं लगा, इस पे भी कुछ नहीं, फेस पे भी कुछ नहीं है, नथिंग ऑन माई फेस, नो फाउंडेशन व्हाटसोएवर. एंड आई एम गोना शेयर the benefits of the rice के क्यों अच्छे हैं, इनमें क्या है. Products that I'm going to use today, and all of them are not from one brand. So let's first discuss this Zenithal. No, this is Zenith Milk, some kind of Korean brand, and it is a 165 ml cleansing rice cleanser. And इसके पीछे आपको ingredients तो मिलते हैं, but it's in Korean, so we can't read that. और इसकी price मैं description box में ऐड करी क्योंकि change होती रहती है, so I don't want to stick to one price. अच्छा जी, it has rice amino acid and टेंडरफिशियल क्लेंजर. अंदर से खोलने पर जब मुझे ये रिसीव हुआ था तो ये सील थी बॉटल, और व्हेन यू स्क्वीज आउट द प्रोडक्ट, द एक्चुअल प्रोडक्ट इज वेरी शाइनी. नाउ समटाइम दिस इज बिट स्केरी कि आपकी प्रोडक्ट इतनी शाइनी क्यों है. एंड ऑन अदर हैंड व्हेन यू सी अ बायो एक्वा प्रोडक्ट्स, तो उनकी हर प्रोडक्ट में आपको शाइन ज़रूर मिलती है. ये क्यों शाइन करती है? दिस इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल दैट इज़ कॉल्ड माइका, जो अक्सर शिमर्स में और केमिकल जो मेकअप प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें डलता है. सो इट मेक्स योर प्रोडक्ट शाइनी. सो या, दिस क्लेंजर इज़ बिट शाइनी, बट मैं आपको यूज़ करके दिखाने वाली हूँ डज इट रियली वर्क और नॉट. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. आफ्टर यूजिंग क्लेंजर यू नीड टू एक्सफोलिएट और स्क्रब योर स्किन. फॉर दैट आई हैव दिस बायो एक्वा राइस स्क्रब, और ये मैंने अपनी वीडियोज़ में इतनी दफ़ा यूज़ किया ना कि ट्रस्ट मी, इनको ना मुझे रॉयल्टी देनी चाहिए. आई लव इट सो मच, एंड आई एम ऑल्सो आउट ऑफ इट ऑलमोस्ट. ये ख़त्म होने वाला है, एंड इट बेसिकली व्हाट इट डज, चलिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ ये क्या करता है. इसके अंदर एक्चुअल राइस पार्टिकल्स हैं और इट रिमूव्स बेसिकली योर डेड स्किन. और वो कैसे रिमूव करता है मैं आपको आगे यूज़ करके बताऊंगी. अच्छा जी, आफ्टर एक्सफोलिएशन आपकी ऑलमोस्ट जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है, बट यू कैन मसाज, एंड फॉर दैट आई हैव दिस राइस जेल, एंड दिस इज़ बाय म्यूसिन. ये म्यूसिन का राइस जेल है, और इसमें देखिए एक्चुअल राइस जो है वो इसमें पार्टिकल्स हैं, वो राइस के जो बुरादा टाइप होता है वो इसके अंदर डला हुआ है. एंड इट इज़ basically a moisturizer. It's a rice gel. You can use it for scrub massaging your face, and you can also use this as a moisturizer. अच्छा जी, उसके बाद I have this Roric rice sheet mask. तो मतलब मेरी स्किन केयर रूटीन में शीट मास्क तो मस्ट है थी. अच्छा, ये शीट मास्क जो है वो फ्रिज में पड़ा था, that's why there is a fog on it, so nothing to worry about. Anyhow, in the end, last but not the least, I'm going to use this rice सीरम. और राइस करता क्या है आपकी स्किन के लिए? इट इज़ एन अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट. इट रिपेयर्स योर स्किन, और अम्यूनो एसिड क्या करते हैं मैं आपको साथ साथ बताती हूँ. एंड बाय द वे, दिस राइस जेल कैन बी यूज इन सो मेनी वेज दैट यू कांट इवन इमेजिन. सो लेट्स स्टे ट्यून्ड, एंड आई एम गोना शेयर विद यू कि दिस प्रोडक्ट यू हैव टू वॉच इट. सो स्टे ट्यून्ड. अब सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लेंजर की. या
amazing, amazing. This is a Zenith, nahi. It's a Korean word. I don't know how to pronounce it. It's Vinami, what do you want to call it? Vinami. It is a amino acid rice cleanser. By the way, do you guys know the difference between a cleanser and a face wash? Yes, there is a big difference between a cleanser and a face wash. That's why the cleansers are more expensive than a face wash. If you go any products website, you will see the face washes are lesser in price, where cleansers are more expensive. So it means that cleansers do more for your skin, and face washes are just a daily face wash. So don't expect too much from a face wash, but cleansers are there for your benefit. So if you want a good cleanser, do invest in a good cleanser. Acha ji, this particular cleanser claims, now listen to this lady, it don't only cleanse your face but also remove the dirt from your face, and along with that it tightens your pores and gives your skin a glow. कमाल चेक करी मेरा, मैंने लिपस्टिक रिमूव नहीं की. I just cleanse around my mouth. Never mind. अच्छा जी, उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ राइस जेल एक्सफोलिएटर स्क्रबर. 2-in-1 है, एंड आई लव दिस प्रोडक्ट सो मच. मतलब सीरियसली दिस इज़ अ मस्ट बिफोर एनी बिग इवेंट when I'm prepping my face. While you have already seen the product from inside, it is a gel-like product. So what it does, when you apply on your face, it start reacting and start removing your dead skin. ये देखिए जी, ये देखिए जी. The prices of all the products are in the description box. So इसकी मजे की, अच्छा, there are also more exfoliators out there like body and face के नाम से एक exfoliator मिलता है. It also exfoliate, but this particular one has a rice ingredients in it. और rice के benefits तो मैं आपको साथ साथ बता ही चुकी हूँ, और सुन लो. राइस इंग्रेडिएंट्स की बेस्ट बात होती है दैट दे आर पैक्ड विद अमीनो एसिड्स. अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? बेसिकली आपकी जो सेल का जो बेस होता है जिससे आपका सेल बनता है, दीज आर द अमीनो एसिड्स दैट हेल्प द रीजनरेशन एंड द ग्रोथ ऑफ योर स्किन. बराबर है ना? ये बेसिकली उस वक्त ज़्यादा काम करता है व्हेन यू डोंट एक्चुअली हैव टू मच थिंग्स ऑन योर फेस. यानी कि अगर आप क्लिनजिंग ना करें और उसको क्लिनजिंग के बगैर यूज़ करें तो इट वर्क्स बेटर. अब एक्चुअली मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि ये क्लेंजर इतना ज़बरदस्त है कि मेरे स्किन पे ऑलरेडी वो डेड स्किन जो है वो रिमूव हो चुकी है, बट स्टिल इट हैज़ डन इनफ. It always fascinates me whenever I saw this. Skin is squeaky clean. By the way, I couldn't resist. I removed the lipstick because I have to remove the dead skin from my lips. So yeah, to make my lips poutable, I have to exfoliate them as well. So next step is to apply a rice sheet mask. Yeah, so after my skin is squeaky clean, this is the best time to apply a sheet mask, and this time I'm using a Roric rice sheet mask. And as like any other product, this brand is also really good for sheet masks. अच्छा जी, इसका जो sheet mask है ना, it is also in a clear form, and there is some product left in the pack, but it's not as much as the Karate one or the Bio one. Sheet mask itself जो serum इसके अंदर है, it's slimy, it's thick, it's not runny. As you can see, there is lots of product on it, but it's not dripping. It is a sign that the quality of the sheet mask serum is nice. So I'm removing this part in advance. I know this doesn't work when you apply both of the sheet masks on your face, and it doesn't look good. So every time I do that, it's completely failing. So let me enjoy my sheet mask, and you hear more benefits of sheet mask. Now rice don't only have amino acid, it also contains vitamin C, E, D, B12. It also promotes the metabolism and the blood circulation, leaving your skin tender, delicate, and removes the cutin, that is the dead skin. The sheet mask itself is bit bigger. बड़े मुंहों के लिए sheet mask काम हो सकता है because going over my forehead, eyes, nose is almost good, and around the mouth, yeah, it's better. It's also covering my chin. So gee, should we eat when we have a sheet mask on our face?
I'm gonna let you know very soon, and we're gonna try and eat something while we have a sheet mask on. How about that? Do let me know in the comment section. Do you want me to eat while I have a sheet mask on my face? I'm waiting for your answer. And the sheet mask, you're not gonna waste the serum inside this pack. We're gonna apply this on our face as well. अच्छा जी, अब आपने अक्सर सोचा होगा कि can we put this leftover serum into actual serum bottle? Let me just tell you something. ये भी serum है, ये भी serum है. The only difference between both of these serums are the concentration of the material. वो कितना concentrate है और ये कितना concentrate है. It needs 10 to 15 to 20 minutes to penetrate into your skin and do its job. While this serum is more concentrated, it's more likely to absorb into your skin. ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है rather than this. ये ग्रीसी ज़्यादा होता है, its molecules are much thicker और वो अपनी स्किन पर उस तरह पेनिट्रेट जल्दी नहीं होते जितनी जल्दी ये हो जाते हैं. So if you want to put this serum into this bottle, you can put it if you have a dry skin. But मेरी तरह अगर oily skin है तो you don't need this much product to put in your face for the rest of the day, क्योंकि आपकी स्किन को बहुत ऑयली कर देगा. अगर आपकी स्किन ड्राई है, you can do this. It's not harmful, but it's better to wash it off. So what I'm gonna do, I'm gonna wash this, take off the sheet mask, and I'm gonna wash it off, and then we're gonna apply the rice serum, and I'm gonna tell you more benefits of rice. You cannot use this again. Don't fold it and put it in the pack to use it again. Seriously. जितना आपके पास इसके अंदर सीरम बच जाए, tap 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 on your skin and then wash it off. And you can actually feel कि इसके अंदर ग्लिसरीन है जिसने आपकी स्किन के ऊपर से सारे wrinkles और ड्राइनेस रिमूव कर दी है, because we remove the dead layer and it will penetrate deep into the skin. Okay, after washing it off, I'm gonna apply the rice serum. This is also from a Roric brand, and what we do, सर्दियों में तो हम इस तरह थोप के अप्लाई कर सकते हैं, but in the summers we cannot actually do that. So what we're gonna do, we're gonna take 2 pumps only, rub it in our hands, gently pat on the skin. I just had this pimple. By the way, if you're also dealing with pimples, I have a video of this Senadrim patch. It's amazing. It's not obvious, but it's better that after applying sheet mask, you don't have to apply serum. But I had the serum, that's why I applied the serum. But one thing must that you should apply is a moisturizer. For today, I'm going to use this rice gel moisturizer. It is really good, and apparently you can moisturize face with the gel in the summer. It's so good. Put it in the fridge and it will cool down and you will feel like so good. Okay. आप इससे सिर्फ moisturize face को नहीं कर सकते. You can also make a rice hair mask, which I'm going to share with you very soon. अच्छा जी. और क्या मेरे पास, yeah, that's all I have. So this is my video. Hope you like my video. If you like that, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. I will see you in my next video. Until then, take very good care of yourself and the loved ones around you. And before you leave, don't forget to check out these videos. These are also really beneficial for you, and this one is especially the Senadrim one I was before talking about. So yeah, thanks for watching, guys. Allah Hafiz.